हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो पिछले वीडियो में हमने शुरू के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था एंड मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था फॉर आंसरिंग। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ड्यूरेबिलिटी। द क्वेश्चन इज इन DBMS ट्रांजेक्शन विच प्रॉपर्टी इंश्योर दैट वन ट्रांजेक्शन कमिट्स its changes are permanently stored in the database even in the event of a system crash। मतलब अगर ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो इंश्योर करता है कि एक बार अगर ट्रांजैक्शन ने कमिट कर दिया तो इवन आफ्टर द सिस्टम क्रैशेस द चेंजेस आर परमानेंटली स्टोर्ड, सो दैट इज इंश्योर्ड बाय ड्यूरेबिलिटी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैलिडिस anomaly कैन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। तो सबसे पहले वैलिडिस anomaly क्या होता है। सो कुछ एल्गोरिथम्स में क्या होता है, अगर इंटुइटिवली हम सोचा कि जो फ्रेम एलोकेशन रहता है हमारे पास, अगर हम फ्रेम एलोकेशन को इंक्रीज़ करें तो आइडियली पेज फॉल्ट कम होना चाहिए, राइट। बट इन सर्टेन एल्गोरिथम्स क्या होता है कि जैसे जैसे हम फ्रेम एलोकेशन इंक्रीज़ करते हैं पेज फॉल्ट भी उसके साथ साथ इंक्रीज़ होने लगता है। सो दैट इज़ वैलिडिस anomaly एंड दिस अकर्स इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following IP addresses belong to a private network block according to RFC 1988। so इनमें से कौन सा IP एड्रेस है जो कि प्राइवेट नेटवर्क को बिलोंग करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको प्राइवेट एड्रेस रेंज पता रहना चाहिए। सो क्लास ए के लिए दिस इज़ द रेंज, और क्लास बी एंड क्लास सी। सो इट्स बेटर कि आप इसको याद कर लें ताकि क्वेश्चन में अगर ऐसा एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली उसको आंसर कर सकें। सो बेस्ड ऑन दीज रेंजेस द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड it's quite simple to remember actually। so the correct answer is C। let's go to next question। next question is from cryptography। which cryptographic algorithm is asymmetric in nature। so cryptographic algorithm जो है दो टाइप के रहते हैं, एक सिमेट्रिक और दूसरा असिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक एल्गोरिथम्स में बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन दोनों सेम ही की का यूज़ करते हैं, बट इन असिमेट्रिक different keys are used for encryption and decryption। so the answer to this question is RSA। RSA is asymmetric and all other these algorithms ये symmetric है, और all of them use same keys। RSA multiple keys use करता है and similar to RSA Diffie-Hellman also uses asymmetric cryptography। next question is what type of software testing focuses on testing individual units or components of a software in installation। मतलब कौन सा टेस्टिंग है जो कि इंडिविजुअल यूनिट्स को टेस्ट करने के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर इज यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग में बेसिकली हम इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को टेस्ट करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम बेसिकली मॉड्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन चेक करते हैं कि लाइक मल्टीपल मॉड्यूल्स आपस में जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को हम चेक करते हैं। सिस्टम टेस्टिंग में हम ओवरऑल सिस्टम को अगेंस्ट SRS चेक करते हैं, लाइक सिस्टम स्पेसिफिकेशन जो हमने डिफाइन किया था इन द स्टार्टिंग, सिस्टम उसके बेसिस पे करेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बेसिकली ये एंड यूज़र लाइक जो यूज़र एक्चुअली में यूज़ करने वाला है सिस्टम को वो टेस्ट करता है। इस टेस्टिंग में बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे सिस्टम करेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं, दैट इज़ वो टेस्ट किया जाता है। रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि अगर हम जब कभी भी हम न्यू चेंजेस करते हैं सिस्टम में, सो हम पुराने टेस्ट केसेस रन करते हैं टू चेक कि लाइक जो प्रीवियस फंक्शनैलिटी था उसमें कुछ छेड़खानी तो नहीं हुई है। सो दैट इज रिग्रेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर अ हैश टेबल ऑफ साइज 10 यूजिंग लीनियर प्रोबिंग इफ द हैश फंक्शन इज hk equals to k mod 10 and keys are 42, 52 and 62। so 62 किस प्लेस पे इंसर्ट होगा, किस 62 को कौन सा इंडेक्स मिलेगा, सो ये हमको बताना है। सो हैश में क्या होता है, व्हाट इज लीनियर प्रोबिंग? लीनियर प्रोबिंग मीन्स कि यूजिंग हैश फंक्शन जो भी हमको इंडेक्स मिल रहा है, लेट्स से अगर वो इंडेक्स खाली नहीं है तो हम लीनियरली नेक्स्ट एम्प्टी इंडेक्स को चेक करते हैं कि कौन सा खाली है एंड दैट उस प्लेस पे हम की को प्लेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हैश फंक्शन है k mod 10, सो k is 42 in this case। okay, let's draw this।
let's say k is 42. So according to this hash function, it will get index 2. Okay. Now in case of 52, again we are getting same index 2, right? 52 mod 10. So answer is 2. But 2 is index 2 is not free. So next index जो कि 3 है वो empty है, तो 52 को third index मिलेगा, right? Now for 62, again the mod function hash function is giving index 2, but index 2 is not empty. Index 2 is not empty. Index, we will search for next index. 3 is also not empty, and we will search for next. 4, yeah, 4 is empty. So 62 will be stored at 4th index. Yeah. So correct answer to this question is 4. Next question. Under the basic two-phase locking protocol, what is the primary limitation that can still happen to a transaction? So two-phase locking में कौन सा प्राइमरी लिमिटेशन है जो कि ट्रांजैक्शन को हो सकता है? ऑप्शंस आर ए, इनकंसिस्टेंट डेटाबेस स्टेट, कैस्केडिंग रोलबैक्स एंड डेडलॉक्स, सी, लॉस ऑफ एटॉमिसिटी, डी, वायलेशन ऑफ serializability, and E, lost of date problem. So the answer of this question is cascading rollbacks and deadlocks. Next question. A C program contains the following block of code. How many child processes will be created in total when this code runs? So this is the code. So basically 2 बार हम fork को कॉल कर रहे हैं और हमसे पूछ रहा है कि कितने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होंगे. So the formula to check this is the total process फाइंड करने का फॉर्मूला है 2 power n. So in this case क्या होगा? 2 power 2 which is equals to 4. But to find number of child processes, the formula is 2 power n minus 1. 2 power n minus 1. So answer will be 4 minus 1. 3. So correct answer is 3. Which protocol in the TCP/IP suite is connectionless and does not guarantee the delivery or order of packets? कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि कनेक्शन लेस होता है और गारंटी नहीं करता डिलीवरी एंड ऑर्डर ऑफ पैकेट्स को? तो TCP तो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है एंड इट गारंटीज डिलीवरी एंड पैकेट्स. UDP इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. In OOPS, what is the correct mechanism used to restrict direct access to some of the object's components, combining data and method into a single unit? मेथड और डेटा को सिंगल यूनिट में जब हम कंबाइन करते हैं उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? आंसर इज एनकैप्सुलेशन. नेक्स्ट. विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इनहेरेंटली बाय द कंपाइलर टू इम्प्लीमेंट रिकर्शन एंड फंक्शन कॉल्स? सो रिकर्शन और फंक्शन कॉल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंपाइलर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है? आंसर इज स्टैक. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम DBMS. In a relational database, if a foreign key is defined with on-delete cascade on table B referring table A, what happens when a row in table A is deleted? So हमको पूछेगा कि हमारे पास एक टेबल है, टेबल A, एंड टेबल B इस टेबल को रेफरेंस कर रहा है यूजिंग फॉरेन की, एंड हमने टेबल B में जब भी फॉरेन की डिफाइन किया तो वहाँ पे हमने ऑन डिलीट कैस्केड भी स्पेसिफाई किया है. सो जब भी टेबल ए में कोई भी रिकॉर्ड डिलीट होगा तो बी पे क्या असर पड़ेगा? सो ऑप्शंस आर द डिलीट ऑपरेशन ऑन ए इज ब्लॉक्ड, corresponding rows in B are automatically deleted, corresponding foreign key column B are set to null, the system raises a referential integrity violation error, table B is dropped. So correct answer is corresponding rows in B are automatically deleted. So basically on delete cascade में क्या होता है कि cascade मतलब to follow, right? So जब भी A में कोई चेंज होगा सिमिलर चेंज B में फॉलो होगा. So since A में हम रो को डिलीट कर रहे हैं, A में हम रो को डिलीट कर रहे हैं एंड B A को रेफर कर रहा था. So because of specifying on delete cascade, टेबल B में भी वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा. In addition to on delete cascade, we also have on delete set null, on delete restrict. set null में क्या होता है, जब भी A में
रिकॉर्ड डिलीट होगा, सो इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम वी, ये उस पर्टिकुलर फॉरेन की का वैल्यू नल कर देता है। एंड ऑन डिलीट रेस्ट्रिक्ट में क्या होगा कि ये डिलीट ऑपरेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। बेसिकली द डिलीट ऑपरेशन इज ब्लॉक्ड, ये वाला ऑप्शन। सो these are the options. So correct answer is B. Next question, which software development model is best suited for projects where requirements are highly dynamic, changing frequently and requires continuous feedback from the clients? So कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स डायनेमिक होते हैं और काफ़ी फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं एंड क्लाइंट से कंटिन्यूस फीडबैक रिक्वायर्ड होता है? सो द करेक्ट आंसर इज एजाइल मॉडल. Next question, which disk scheduling algorithm is also known as the elevator algorithm because it moves the disk arm in one direction, scanning for requests, then reverses direction at the boundary? So the correct answer is scan. Scan algorithm क्या करता है कि डिस्क का जो हेड रहता है वो एक एंड से स्टार्ट होता है एंड लास्ट तक जाता है, अगले एंड तक जाता है, एंड बीच में जो जो रिक्वेस्ट आते हैं उन सबको फुलफिल करता जाता है. सो सिमिलरली जैसे एलिवेटर बॉटम से टॉप जाता है एंड टॉप से बॉटम आता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एलिवेटर एल्गोरिथम. करेक्ट आंसर इज सी. लास्ट क्वेश्चन, इन HTTP where method is typically used to in HTTP which method is typically used to update an existing resource entirely or create it if it does not exist and is designed to be idempotent? ऐसा कौन सा मेथड है जो कि आइदर रिसोर्स को अपडेट करता है या फिर क्रिएट करता है अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, एंड इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट? सो वी नो कि पुट इज आइडेम्पोटेंट, ऑल दीज आर नॉट आइडेम्पोटेंट. सो करेक्ट आंसर इज सी. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स योर सजेशंस एंड फीडबैक so that I can help you better in your preparation. Thanks for watching.